Suhani. Good morning, respected Principal Sir, Mr. Purvadas, Headmaster Sunil Kumar Tiwari, Headmistress Yvonne Ma'am, teaching and non-teaching staff. I, Varsha Srivastav, welcomes you all to the 73rd Republic Day celebration of Ramakrishna Mission English School, Sidhgora and Vivekananda Middle School, Sidhgora. Please come forward and hoist the national flag, followed by national anthem. Good morning, Miss. Now, Arpita Miss will say Swadesh mantra, followed by our school prayer song by Ruma Miss. Swadesh mantra. O India, forget not that the ideal of thy womanhood is Sita, Savitri, Damayanti. Forget not that the god thou worshippest is the great ascetic of ascetics, the all-renouncing Shankara, the Lord of Uma. Forget not that thy marriage, thy wealth, thy life are not for sense pleasure, are not for thy individual personal happiness. Forget not that thou art born as a sacrifice to the mother's altar. Forget not that thy social order is but the reflex of the infinite universal motherhood. Forget not that the lower classes, the ignorant, the poor, the illiterate, the cobbler, the sweeper are thy flesh and blood, thy brothers. Thou brave one,
Be bold, take courage, be proud that thou art an Indian, and proudly proclaim, I am an Indian. Every Indian is my brother. Say, the ignorant Indian, the poor and destitute Indian, the Brahmin Indian, the Pariah Indian is my brother. Thou too, clad with but a rag round thy loins, proudly proclaim at the top of thy voice, the Indian is my brother. The Indian is my life. India's god and goddesses are my god. India's society is the cradle of my infancy, the pleasure garden of my youth, the sacred heaven, the Varanasi of my old age. Say, brother, the soil of India is my highest heaven. The good of India is my good. And repeat and pray day and night. O thou Lord of glory, O thou Mother of the universe, vouchsafe manliness unto me. O thou Mother of strength, take away my weakness, take away my unmanliness, and make me a man. Ram Krishna Sharanam, 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 Sharanam, Ram
Sukanya Majhi of 2E, who will deliver English speech. Sukanya Majhi of Standard 2E. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning, teachers. আমার দেশের মাটি আমার যে ভিক্ষা ছেলেটা ঠিক করে এটা আমি মানে গলার ফাঁকটা তো চিবিয়ে যায় আমার গলাটা আমারও তো গেল তো ঠাকুমা যেমন তো আমার বাবারও বেশি জুড়ে কথা বলতে পারি না বেশি ইয়ে করতে চিৎকার করতে পারি কেমিস্ট্রিটা দেখ আমি বারবার বলছি বললে না খাবি কিন্তু Arpan, mute your phone. है यहाँ पे Anwesha Paul. तो बैठा अभी काम लैपटॉप लेके रिफ्रेशमेंट पहुंचाना होगा सर्टिफिकेट. तो Rama must bring the tea and coming. I told her to bring the tea. आपको बताया जैसा. Singara he said oh नहीं oh he's giving आलू चप. He's giving आलू चप. Kapish Sharma is here. Kapish Sharma, are you there? Kapish Kumar. Okay, Kapish Kumar. Yes, teacher. Kapish Kumar of Standard 3D will recite Hindi poem on Republic Day. Yes, teacher. सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी शिक्षक एवं शिक्षकगण और मेरे प्रिय सहपाठियों में कपीश कुमार कक्षा 3D का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने गणतंत्र दिवस के बारे में एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज मेरे देश में गणतंत्र है आया, देश में हर तरफ लोकतंत्र है छाया। अब न करना हमसे कोई सवाल, स्वेच्छा किया है हमने मतदान। अब न सुनेंगे कोई बहाना, लोकतंत्र ही है शक्ति भली भांति जाना। अगर की अपनी मनमानी सुनेंगे नहीं कोई कहानी, फिर से उठा लेंगे हथियार, मतदान है हमारा अधिकार। अगर आना है अगली बार विकास करो मोदी इस बार। धन्यवाद। Thank you, Kapish. Saniya Kumari of Standard 3 will deliver speech on Republic Day. Saniya Sen of Standard 6 will deliver English speech on Republic Day. Saniya Sen, are you there?
Saniya Sen of Standard 6D, 6C, sorry. Saniya Sen is not there. Then ask again, once again, UKG is not there also. She is not receiving the call. Yes. We move on to the next participant. Sukanya Majhi आई है देखो. Call, ask Sukanya Majhi are there. Okay. Sukanya Majhi, has she joined the link? No. Paul, Anwesha Paul. Yes, teacher. Yes, Anwesha, please start. Good morning, teacher. Good morning, everyone. I am Sukanya Majhi, student of Standard 2E. All of us are virtually gathered here to celebrate the 73rd Republic Day of our country today. I am obliged and honored to give a speech on Republic Day. Republic Day is celebrated on January 26th every year with a lot of joy, happiness, and pride in our hearts. As on this day in the year 1950, the Indian Constitution came into effect. We all know that India got independence on August 15, 1947, but the nation didn't have any constitution of its own. However, after many discussion and consideration, a committee headed by Dr. B.R. Ambedkar submitted a draft of the Indian Constitution, which was adopted on November 26, 1949, and officially came into effect on January 26, 19. I would like to conclude my speech by saying that India is a democratic country. The citizens living in a democratic country enjoy the privilege to elect their leader to lead the country. Although there has been a lot of improvement till now, still the nation is facing a few problems such as pollution, poverty, unemployment, etc. One thing we all can do is to promise each other that we will become a better version ourselves so that we could contribute to solving all these problems and making our nation a good place. Thank you. Jai Hind. We are going to witness song performance of Arpan Ghosh, What to Be. Arpan Ghosh. Good morning, sir, ma'am, teachers, and my dear friends. My name is Arpan Ghosh. I study in 2B. Today I will sing a song on Republic Day. मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन शांति का उन्नति का प्यार का चमन इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन जाने मन जाने मन जाने मन इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन जाने मन जाने मन जाने मन इसकी मिट्टी से बनी तेरे मेरे ये वतन इसकी धरती तेरे वास्ते गगन इसने सिखाया हमको जीने का जलन जीने का जलन जीने का जलन इसके वास्ते निसार है
मेरा तन मेरा मन, ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपना देश को सजाएंगे। शस्त्र होगा जिंदगी का, होगा सब मगन, होगी सब मगन, होगी सब मगन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन, ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। थैंक यू। बलिदान देश कभी आज जब जब पंडित को देश आज जब मुल्ला को मस्जिद में राम नजर आए, जब पंडित let us go Mouthika Paul singing Mouthika Paul is here. Ma'am. Mouthika, please turn. Yes. Ma'am. Ma'am. Yes, what happened? Mouthika, you are audible. Please start, Mouthika. Yes, ma'am. हे धरा जननी हमारी, सारे जग में पूछ है। हे धरा जननी हमारी, सारे जग में पूछ है। यहाँ वीर धीर अनंत है, यहाँ वीर धीर अनंत है। जहाँ वीरता का मान है। हे धरा जननी हमारी, सारे जग में पूछ है। साधना आराधना में एकता के रूप है। स्वच्छ और स्वच्छंदता के हम बदलते रूप है। आमल के नव युगों
कल्पना करते रहे। आमल के नवयुगों का कल्पना करते रहे। हे धरा जननी हमारी, सारे जग में पूछ है। यहाँ वीर धीर अनंत है, यहाँ वीर धीर अनंत है। जहाँ विद्यता का मान है। हे धरा जननी हमारी, सारे जग में पूछ है। तुम बढ़ो बढ़ते चलो, तुम बढ़ो बढ़ते चलो। चुनौतियाँ है सामने, तुम बढ़ो बढ़ते चलो। चुनौतियाँ है सामने, रास्ते चाहे कठिन हो, सामने पहाड़ हो। करे रहे संकल्प हम ये, श्रृंखला चलते रहे। हे धरा जननी हमारी, सारे जग में पूछ है। यहाँ वीर धीर अनंत है, यहाँ वीर धीर अनंत है। जहाँ विद्यता का मान है। हे धरा जननी हमारी, सारे जग में पूछ है। मेरा वतन अपना वतन, तुमको नमन स्वीकार हो, तुमको नमन स्वीकार हो, तुमको नमन स्वीकार हो। Thank you. Okay, thank you. Anwesha Paul of UKGC will recite Bengali poem. Anwesha Paul of UKGC will recite Bengali poem. Yes, teacher. Good morning, sir, ma'am, teacher, and my dear friends. My name is Anwesha Paul. I study in UKGC. Today I am going to recite a Bengali poem about our national flag. Namaskar. আমার কবিতার নাম পতাকা পাঁচ রং, লেখক হলেন কবি সুকান্ত আচার্য। বলো তো দেখি পতাকায় মোদের কয়টি রং আছে? শিক্ষক এসে শুধালেন হেসে দ্বিতীয় শ্রেণীর কাছে। একসাথে মিলে সব ছেলে বলে চিৎকার করে জোরে, তিনটি বর্ণ রয়েছে রাঙানো জাতীয় পতাকার জুড়ে। শ্রেণীর পিছনে বেঞ্চের কোণে শিশু ছিল এক বসে, পতাকার মাঝে পাঁচ রং আছে বলল সে মৃদু ভাষে। কথা তার শুনে বাকি শিশু গণে হেসে খায় দুটো। শিক্ষক রেগে বলেন হেঁকে বোঝাও কি করে পাঁচটি। মাথা নিচু করে ভয়ার্ত স্বরে সরল শিশুটি বলে, পরে গেরুয়া মাঝখানে সাদা, সবুজ আছে তার তলে, আর আছে আঁকা গোলাপ কাঁচ চাকা, নীল রং আছে এতে। শিক্ষক বলে একটিকে ধরলে তবু হচ্ছে চারটে। অপর শিশুটি
বলল তখন রং আছে আর এক লাল লাল ছোপ দেখা যায় ওই পতাকার মাঝে। বাবাকে যখন আনলে ওরা কফিনে ঢাকা খুলে জড়ানো রয়েছে দেহ তার পতাকার ফুলে। রক্তের দাগে ছিল লাল ছোপ ওই পতাকার মাঝে। এই নিয়ে মোট হলো 5টি। এবার তো ঠিক আছে? সরল শিশুটির জবাব খানিক কাঁপিয়ে দিল মুখ। অশ্রু এলো নয়ন পড়ে শুকনো হলো মুখ। আজও যারা দেশের জন্য করছে বলিদান, স্বাধীনতার শহীদ কামুক তাদের অমর প্রাণ। হয়েছি স্বাধীন পেরিয়ে গেছে 70টি বছর, দেশ বাঁচাতে যাচ্ছে যে প্রাণ। রাখছি কি তার খবর? রাখছি কি তার খবর? ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, জয় ভারত। थैंक यू। ओ मेरे देश की माटी गीत में टैगोर ने मातृभूमि के प्रति मर्मस्पर्शी शब्दों में अपनी श्रद्धा व्यक्त की है। मातृभूमि ने हमें जो अपरिमित स्नेह एवं प्यार प्रदान किया है, उससे हम श्रद्धा से नतमस्तक है। गीत के अंतिम पंक्तियों तक पहुंचते पहुंचते हमें ऐसा आभास होने लगता है कि मातृभूमि ने हमें असीम प्यार और स्नेह प्रदान किया है। उसका ऋण हम किसी भी तरह प्यार एवं बलिदान से भी संभव नहीं है। I would request Kaushal Mukherjee to please sing "O मेरे देश की माटी." Good morning, respected principal sir, Yvonne ma'am, teachers, and my dear friends. Today I'm going to sing "O मेरे देश की माटी." ओ मेरे देश की माटी, तुझको करूँ लाखों प्रणाम। ओ मेरे देश की माटी, तुझको करूँ लाखों प्रणाम। तुझसे है मेरी सुबह, तुझसे है मेरी सुबह, तुझसे है शाम। ओ मेरे देश की माटी, तुझको करूँ लाखों प्रणाम। ओ मेरे देश की माटी, तुझको करूँ लाखों प्रणाम। तू तैरती है मेरी रूह में, तू मिल गई मेरे लहू में। तू तैरती है मेरी रूह में, तू मिल गई मेरे लहू में। तेरी ही मूरत से सजा हुआ दिल है मेरा। ओ मेरे देश की माटी, तुझको करूँ लाखों प्रणाम। ओ मेरे देश की माटी, तुझको करूँ लाखों प्रणाम। ओ माझी नाम मेरा, मरना मेरा तुझी से है यहाँ। मेरा ठिकाना कहाँ थोड़ा हो गया और कहाँ, तूने रखा मेरे हाथ में किया शीतल हाथ में, तूने तृप्त किया शीतल जल से। तूने हर दर्द लिया और मुझे चैन दिया। ओ मेरे देश की माटी, तुझको
तुझको करूँ लाखों प्रणाम। ओ मेरे देश की माटी, तुझको करूँ लाखों प्रणाम। ओ माँ तेरे लिए किया है क्या, तुझे दिया है क्या, कभी तेरे लिए मैंने आंसू पिया है क्या। यूं ही बिता दिया सारा जीवन, उलझा रहा दुनिया में ये मन। यूं ही बिता दिया सारा जीवन, उलझा रहा दुनिया में ये मन। प्यार है कर्ज तेरा, तुझ पे करूँ कैसे अदा। ओ मेरे देश की माटी, तुझको करूँ लाखों प्रणाम। ओ मेरे देश की माटी, तुझको करूँ लाखों प्रणाम। वो मेरे देश की माटी, तुझको करूँ लाखों प्रणाम। थैंक यू। Thank you, Kaushal. Dipanita Acharya of Standard 6-8C will deliver Hindi speech. Dipanita Acharya. Yes, ma'am. शुभ प्रभात। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, प्रधानाध्यापक महोदय, शिक्षक एवं शिक्षिकाएं एवं मेरे प्रिय मित्रों, मेरा नाम दीपान्विता आचार्य है। मैं विवेकानंद मध्य विद्यालय की 8वीं श्रेणी की छात्रा हूँ। मैं आप सभी के समक्ष शुभ अवसर जा रही हूँ। गणतंत्र दिवस शहीदों का सपना जब सच हुआ, Dipanita, your mic has turned off, Dipanita. Okay, yes. शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। आओ सलाम करें उन वीरों को जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ। आज हमारा भारत देश अपना गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। यह हमारा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है। इस पावन अवसर पर आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश हुकूमत से आजादी के बाद हमारे देश को सही तरीके से चलाने का कोई नियम और कानून नहीं था। उस समय डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के नेतृत्व में स्थापित समिति द्वारा 2 साल 11 महीने और 18 दिन में परिश्रम के बाद हमारे देश का सशक्त संविधान तैयार किया गया। 26 जनवरी 1950 में भारत देश ने अपना संविधान लागू किया। उसी समय हमारे देश सार्वभौम गणतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। हमारे देश का संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। इस महान संविधान ने हमें अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने की ताकत दी है। 26 जनवरी के साय को आतिशबाजी छोड़ी जाती है तथा रात्रि के समय सरकारी भवनों पर रोशनी की जाती है। देश के सभी गांव, नगरों, स्कूलों व कॉलेजों में सभाएं की जाती है। इन सभाओं में देश की एकता, अखंडता व स्वतंत्रता को बनाए रखने की प्रतिज्ञा की जाती है। हमारे देश को स्वतंत्र और गणतंत्र बनाने के लिए
अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की परवाह तक नहीं की। उन सब सूरवीरों को आज हम दिल से याद करते हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण आज हम चैन की सांसें ले रहे हैं। आजादी के सालों बाद आज भी हमारे देश के वीर नौजवान हथेली पर अपनी जान लेकर सीमा पर शत्रुओं का सामना कर रहे हैं। अपनी मातृभूमि के लिए वो मर मिटने को सदा तैयार है। हम भारतवासी उनको दिल से सलाम करते हैं। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती ये तो हो माला, जीवा ये गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। बोलो भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद। I, Varsha Srivastav, would like to take your 2 minutes by ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुंह से निकल के खून कहे। सरसों से भरी खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा ना सका। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बढ़ के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बढ़ के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। Thank you for hearing me. Thank you very much. Okay, now moving on to the next participant. Aditi Pandey of Standard 8C will recite PPT on Republic Day. Yes, miss. A very warm greeting to everyone. I am Aditi Pandey from Standard 8C. And yes, today is another happiest day for all of us while celebrating our National Republic Day. This day is celebrated in India with great enthusiasm on 26 January. On this day, 1950, the Constitution of India came into force after the country gained independence from British rule for over 200 years. On November 26, 1949, the Constituent Assembly of India adopted the Constitution, but it came into force on 26 Jan 1950. Honoring this day, everyone in India celebrates it by hosting flag. Educational institute organize cultural programs, speeches, essay writing, songs, and many more. Now, I would like to share those patriotic words of our great leaders who helped us
to achieve this success. Bhagat Singh, the sanctity of law can be maintained only so as long as it the oppression of the will of the people. Swami Vivekananda, let new India arise out of the peasant's cottage, grasping the plug out of herd, cobblers and sweepers. Dr. B.R. Ambedkar, Constitution is not a mere lawyer's document. It is the vehicle of life, and its spirit is always the spirit of age. Mahatma Gandhi, you must be the change that you want to see in the world. Netaji Subhash Chandra Bose, freedom is not taken. Freedom is not given, it is taken. At last, we can proudly say that our country is not only independent, but a republic country too. Thank you and a happy Republic Day. Shrishti Singh of Standard 11 Commerce will do the PPT presentation on have a comparative look between that golden day, 26 January 1950 and today, 26 January 2022. Shrishti, are you there? Yes, miss. Okay. Good morning, respected principals, sir, teachers, and all my dear friends. Myself, Shrishti Singh, and today I am here to deliver a speech on Republic Day. I feel very special to be a part of this special occasion. So let's have a look as a comparative look of the golden day 26 January 1950 and today 26 January 2022. Today, we all are celebrating the 73rd Republic Day of our nation after 2.5 years of India's independence in 1947. It started celebrating from the year 1950. We celebrate it every year on 26 January because on this day, the Constitution of India came into existence. Our country became independent on 15th August 1947. After a long war of independence and lakhs of sacrifices. But still, this freedom was incomplete because at that time, our country was divided into many pieces, which was the biggest challenge of the country to unite. Because our country did not have any written constitutions of its own, no development is possible without discipline, be it a person or a country. Keeping this in mind, the Constitution's Assembly was formed, which had 299 members. It was presided over by Dr. Rajendra Prasad. Its first meeting was held in December 1946, and in 2 years, 11 months, 18 days, it was finally completed on 26 January 1949. It was implemented across the countries on 26 January 1950. And now, as an Indian citizen, we are also fully responsible for our country. We should make ourselves regular, read the news, and be aware of the happenings in the country, what is happening right and wrong, what our leaders are doing, and first of all, what we are doing for our country.
Earlier, India was a slave country under the British rule, which got freedom after many years of struggles through the sacrifices of thousands of our freedom fighters. Therefore, we should not easily let go all of our precious sacrifices and again let it become a slave to corruption, illiteracy, inequality, and other social discriminations. Today is the best day when we should pledge to preserve the real meaning, status, prestige of our country, and most importantly, the culture of humanity. The great heroes of our country have fulfilled their responsibility by giving us freedom and making our constitution in a democracy. There is a system of people. The people are the people. Therefore, it becomes our fundamental duty to protect and respect the system and the constitution of our country. Addressing you today on this auspicious occasion, I am ending my speech by paying my respect and tributes to those great volunteers. Wishing you once again a very happy Republic Day. Thank you. Thank you, Srishti. Now moving on to next performance. Saniya Sen of Standard 6C will deliver an English speech on Republic Day. Yes, miss. Good morning, respected principal, sir, teachers, and my dear friends. I, Saniya Sen of Standard 6C, is greeting to all of you on this Republic Day. Today is 26th January, the Republic Day of our country. It's the day to celebrate the values Saniya, of our democracy. Excuse me, Saniya, please switch on your camera. It's the day to celebrate the values of our democracy and republic. It's the day to celebrate India and the spirit of being Indian. After the hard struggles and sacrifices of our great freedom fighters, India became independent from British rule on 15th of August 1947. The Constitution of India was drafted under the leadership of Dr. B.R. Ambedkar. India became republic after the Constitution came into effect on 26th of January 1950. Republic means that the citizens of the country have the right to elect its leaders to lead the country. Since then, India is progressing with a new zeal and enthusiasm. The whole world is watching our achievements and appreciations, but there are still many tasks to be accomplished, gaps to be filled, and tears to be wiped. While walking on the path of development and success, we must not forget the sacrifices of our ancestors made for our freedom. We must not forget the soldiers who perform their duty every day to preserve our independence and democracy. We must perform all our duties as a responsible citizen and support country's development. Let us all pledge today to work hard and make our country the strongest economy in the world. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Thank you, Saniya. A great principle builds character, inspires dream, encourages creativity, builds confidence, instills a love of learning, touches our heart, and changes our lives forever. I would request Principal Sir to please say a few words.
So, a very good morning, respected theory sir, even Miss, all our teachers, students. So as you already know it, that we are celebrating the 73rd Republic Day. It is 26th January 1950 that we adopted our constitution. The constitution is the document guideline for the government of the country to rule it, to serve its people. And the most important thing of this constitution is that the rules which are written there in the constitution, it was not imposed on us by any authoritarian government, but we, the people of the country, you can see at the preamble of the constitution that we, the people of the country, we are giving this constitution to ourselves. So we have done it. The Constituent Assembly, they represented the people of the country, and on behalf of the people only, we are giving this constitution to ourselves, so that by ensuring the enforcement of the laws, we can live here in this country peacefully. The laws should be abided by mutually. I should follow the rules, and as enlightened citizens, so we are giving the constitution to ourselves. And in the constitution, there are two parts. The one part is telling about the rights of the people. Rights. As a citizen of this independent, sovereign, democratic country, what rights I can enjoy. And at the same time, there are duties also. That what should be my duty for my country. Wherever there is an institution or government, everywhere that should be followed. These rights and then duties. The central government, as a government, they should ensure that the rights of the people, they are protected. And at the same time, the people of the country,
they must also ensure that as a responsible citizen of the country, they will also do their duties properly. If we can do our duties properly, if everyone, each and every citizen, they are well disciplined, wherever they are working, they do their work sincerely, they are honest citizens, they have sympathy for others, then each and everyone, by doing their duties properly, can ensure the rights of others. If I do my duty, I can ensure the rights of others, and when others are doing their duty, then my rights can be guaranteed. So it's a kind of mutual understanding. The leaders of the country, the parliamentarians, they must know it. They must be well aware of the rights of the citizens of the country, the common people of the country. But what generally happens is a little bit different. Before elections, our parliamentarians, they tell people how many rights they are going to guarantee to the people. They are going to give to the people. Before election, they tell people, this is your right, and I will ensure that you can enjoy your rights. But after the election, they perhaps forget it. But they should not. After election, they only know what is their rights, and their main concern only confined with enjoying their own rights. But this should not be there. As teachers in schools, we should know what is the right of the student. What are the rights of the student? A student has the right to get the best education from his teacher. A student has the right to demand or to request the teacher to explain the things properly. A student has the right to ask his teacher to tell him what are the proper code of conduct he or she should follow. If as teachers we always follow our duties, we are disciplined, whatever we tell our students, we try to keep our words. The works which the students they submit as assignments, if we do it properly, if we don't show any kind of partiality while evaluating a student, only that spirit goes to the students. Yes, I was never deprived by my teacher, whether I belong to a poor family or I belong to a rich family, whether I belong to upper caste or lower caste, whether my complexion is fair or black, that does not matter to my teacher. They are all good to all of us and they never discriminate. This is the spirit which students learn from schools, and all their life they actually carry it forward and reflect in the society through their behavior. So a school is called a miniature society, and on the day of 26 January, Republic Day, as teachers, we cannot tell everyone, we cannot claim from the leaders that they should do their duties. We cannot claim, but we can present ourselves as role models. As teachers, if we are perfect, then our students every year
hundreds of students, they come to our school and they go out as pass out students. So wherever they are going, in all government institutions, in schools, colleges, universities, government offices, they will actually reflect through their character what we have reflected to them through our character. Only teaching good, teaching efficiently, it is required, but this is not enough, this is not sufficient. Our private life and public life both matter a lot to the student or the upbringing of the student. So I think that is the best thing, that is the best place we can take on this Day of Republic, Day of India, that as teachers we shall try to present ourselves as a perfect role model for our students. And our students will take the oath that they will always take and learn the good things from their teachers, and in future they will become bright citizens of the country, great leaders of the country, to lead the country to prosperity. So with the best wishes of Republic Day, I'll conclude here. Thank you everyone. Bande Mataram. Bande Bharatam, Jai Hind. Thank you, sir. No duty is more urgent than that of returning thanks. I would request Sudha Miss to please, I would request Sudha Miss for the vote of thanks. यहाँ सभी उपस्थित को सुप्रभात। आप सभी को 73वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस हम सभी भारतीयों के अंदर हर्ष, उल्लास और नए सोच का संचार करता है। हम अमर शहीदों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे और अपने देश की रक्षा, गौरव और उत्थान के लिए सदा समर्पित रहेंगे। हमारे विद्यालय के भव्य प्रांगण में ध्वजारोहण किया गया और राष्ट्रीय गान गाकर हम सभी ने इस तिरंगे का सम्मान बढ़ाया। अब मैं अपने वक्तव्य को विराम देते हुए सभी को धन्यवाद ज्ञापन करूंगी। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, प्रधानाध्यापक तिवारी सर, मुख्य संचालिका युवन मैम को धन्यवाद। इस कार्यक्रम में सभी प्रतिभागी बच्चों को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने अपने भाषण, गीतों और कविता से सभी के दिल को रोमांचित और प्रफुल्लित कर दिया। संगीत अध्यापिका रुमा के मधुर गीतों से हमारा दिल बाग बाग हो गया। इन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। गणतंत्र दिवस की मेजबानी अध्यापिका वर्षा श्रीवास्तव ने बड़े मनोरम ढंग से प्रस्तुत किया, मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ। तकनीकी दल के अध्यापिका विम्मी, अध्यापिका पायल और अध्यापिका सुष्मिता को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिस्पर्धा समन्वयक अध्यापिका शंपा, अध्यापिका सुनीता, अध्यापिका श्रेष्ठा, अध्यापिका संजयवती, अध्यापिका कुलदीप और अध्यापिका गुंजन को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। प्रतिस्पर्धा सहायिका अध्यापिका अर्पिता को धन्यवाद। इन्होंने बहुत रोचक और मनभावन कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। जमीन प्रभारी अध्यापक सुनील, अध्यापक अमित, अध्यापिका पूजा, अध्यापिका लूसी और अध्यापिका संजयवती को बहुत बहुत धन्यवाद। जलपान विभाग के अंतर्गत मोनिका कारराय, अंजलि तिवारी, संगीता कुमारी तथा दिलीप लाहा सर को बहुत बहुत आभार। और शैक्षणिक कर्मचारी वर्ग को बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यापिका पूजा पांडे और अध्यापिका स्मिता शालिनी को धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक वृंद को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अभिभावक गण को भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मैं अपनी वाणी को एक काव्य की चंद पंक्तियों के माध्यम से विराम दूंगी। बलिदानियों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आजाद हुआ। आज सलाम करें उन वीरों को जिनकी शहादत से भारत गणतंत्र हुआ। वंदे मातरम, भारत माता की जय।
धन्यवाद। Thank you, Sudha Miss. I would request Ruma Miss to please sing the national song. I would request Ruma Miss to please sing the national song. Thank you, Ruma Miss. No caste can divide us. No laws can separate us. No color or creed can decide our future because we are children of one mother. Here we come to an end. I would like to thank Principal Sir, Yvonne Ma'am, and all the teachers. And I would request all the teachers to please wait for the refreshment.